वही किंग गेमर बहुत बढ़िया हूँ भाई, बहुत बढ़िया। आगे मैंने सोचा यार आके अब ज़रा उसकी स्टोरी आगे बढ़ाई जाए, बाइजू की। बाइजू की स्टोरी, तो बाइजू की स्टोरी करने के लिए आए हैं हम। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं शाम को दोबारा आया हूँ। HSR खेल रहे हो कि नहीं? अरे क्यों नहीं खेल रहा भाई, बिल्कुल खेल रहा हूँ। TTG गेम्स, ओला ओला ओला। यार थोड़ा सा AC का ना पंखा बढ़ाना पड़ेगा, फैन स्पीड। गर्मी लग रही है यार। लाइक दबा दो जल्दी से, जल्दी जल्दी लाइक दबा दो, जल्दी जल्दी। बाइजू की स्टोरी क्वेस्ट करनी है यहाँ USA में मॉर्निंग। अरे वाह। हाँ तो वहाँ पे सुबह के 8:30 कितने बज रहे होंगे? 7 7:30 बज रहे होंगे। US में कहाँ पे हो भाई? मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, इसमें क्या ही क्वेश्चन है? तुम अभी 11th में आए हो ना। कुछ ऑप्टिक्स वगैरह का पूछना हो तो पूछ लेना। मेरा ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग था स्कूल के अंदर। उसके अलावा कुछ नहीं था। अब पता नहीं कितना याद होगा, कितना भूल गए। इतना ही पता था कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, कि यहाँ से लाइट आती है और यहाँ जाती है, फिर यहाँ से लाइट आती है और यहाँ जाती है, और जो इस पॉइंट पे लाइट मिलती है उस पॉइंट पे इमेज बनती है। ये पता था मुझे। नहीं ब्रो, कैलिफोर्निया। हाँ तो कैलिफोर्निया US में ही तो है। मैंने वही तो पूछा, US में कहाँ रहते हो? अब हम सीधा पहुँचेंगे पहले ये रही यहाँ पे बाइजू की स्टोरी क्वेस्ट। बूबू फार्मेसी जाना है, बूबू फार्मेसी। सीधा रास्ता नहीं, बूबू फार्मेसी का। उड़ते हुए पहुंचे थे हम कहीं से, एक बार उड़ते हुए जाएंगे यहाँ से। 8 बजे है ना। प्रतीक यो व्हाट्सअप। आज आर्कन बहुत टेंशन में होंगे। क्यों? मैं टेंशन में क्यों हूँ भाई? ऑप्टिक्स नहीं, वेक्टर्स चालू हैं। ऑप्टिक्स तो ईजी है फॉर नाउ। ऑप्टिक्स ईजी है इसलिए तो मैंने कहा ना कि वो एक लौती चीज़ थी जो मुझे अच्छे से आती थी। बाकी सब मेरा डब्बा गोल था। मेरे पास भी 11th में PCM थी, जिससे परेशान होकर मैंने 12th में फिर आर्ट्स ले ली थी। प्रतीक भाई मैं टेंशन में क्यों हूँ, जल्दी बताओ। अब तुमने ऐसी बात बोल दी तो ये सुन के मैं टेंशन में और आ गया कि मैं टेंशन में क्यों हूँगा। अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे क्यों होना चाहिए? $2000 की नोट बैन हो गई ना? हैं? In a big decision, Reserve Bank of India today stopped the circulation of 2000 rupees currency notes. The big decision on the 2000 rupees currency note doesn't mean that it will stop the note validation. The notes can be used in the formal manner. However, the currency holder will need to exchange them on or before 30 September. यार ये लोग ना जान ही लेके मानेंगे। आपके पास तो बहुत होगी। हाँ अभी मेरे कपड़े झाड़ो के 2000 के नोट गिरेंगे। अभी 1 घंटे पहले न्यूज़ आई है। 1 घंटे भी नहीं, अभी आई है। तो मतलब कि इनवैलिड नहीं हुआ है, लेकिन उसको चेंज कराओ 30 सितंबर से पहले पहले। भाई मैं तो अगली मेरे को जो भी पेमेंट्स आएगी मना कर दूंगा, 2000 का नोट मत देना। The 2000 rupees note circulation banned by RBI 10 big updates. The big decision on the rupees 2000 currency note doesn't mean that it will stop the notes validation. The notes can be used in the formal manner. ये तो पढ़ लिया। 2000 का नोट जो था ना, 2000 के नोट का इशू एक बार एक ये भी था कि अगर तुम उसको ले जाते ना किसी ATM के अंदर, जो ATM ऐसे होते हैं जो कैश एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट के लिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। 2000 नोट निकाल देता था बाहर। आप डालते थे मशीन के अंदर, निकाल देता था। और बहुत टाइम से किसी भी ATM में 2000 का नोट नहीं निकला है। सिर्फ 500 के ही नोट निकल रहे हैं बहुत टाइम से। अगर तुमने नोटिस किया हो, कभी ATM गए हो तो 500 के ही नोट निकल रहे हैं, 2000 का निकलता भी नहीं है। 2000 का नोट अगर इनफैक्ट अगर आपको सबमिट कराना है ना, तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, टेलर को देना पड़ता है कि मेरे अकाउंट में डाल दो।
तो ज़रा पढ़ लें पहले क्या है, बड़ी बड़ी न्यूज़ है ये। ब्रो ब्रॉल स्टार्स ट्राई किया है कभी? यार जब आया था ना ब्रॉल स्टार्स, जब आया था तभी ट्राई किया था उसके, वो मैंने इसे 4-5 महीने खेला होगा, उसका छोड़ दिया मैंने, नहीं खेला मैंने। तो क्वेश्चन ये है कि एक मक्खी है 1 ग्राम का, वो 2 सेकंड में रूम का एक कोने पे गई। रूम का डायमेंशन है 6x8x9, तो उसकी वेलोसिटी निकालो। अभी तो बहुत आसान है यार, एक बार में बस 10 नोट चेंज कर सकते हैं। आरबीआई ने 2000 का नोट बनाना ही बंद कर दिया है। चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। हाँ, नोट बनाना बंद कर दिया 2000 का, पक्की बात है। पर इस बार एक्सचेंज टाइम पीरियड बहुत दिया। हाँ 23 सितंबर तक है, हो जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं 10 पॉइंट क्या क्या है। आरबीआई बैन्स 2000 नोट्स। द आरबीआई इन अ सरप्राइज डिसीजन हैज बैंड ₹2000 नोट्स। अरे ऐसे नहीं पढ़ता ना, उस वैसे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, होता है ना न्यूज़ स्टाइल में, ठीक है, न्यूज़ स्टाइल में पढ़ेंगे। रुको, थोड़ा इफेक्ट के साथ पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं। ऐड जाने दो एक बार जरा। ओके अबे ब्रेकिंग न्यूज़ कब आएगा? लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष और मैं हूं आज आपके साथ एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। आरबीआई ने 2000 का नोट फिर से बंद कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने, आरबीआई ने 2000 के नोट पे बैन लगा दिया। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से 2000 का नोट वैसे भी हम कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो ना एटीएम से निकल रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो आइए हमारे संवाददाता से हम जानते हैं कि क्या वो 10 पॉइंट हैं जो आरबीआई ने अभी हमें बताए हैं कि 10,000 का नोट बैन करने पे। कि तो आरबीआई ने 2000 का नोट बैन कर दिया है और 2000 का नोट बैन नहीं हुआ है। बेसिकली आप उसको अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर 2000 rupees demonetized? No, the 2000 rupees notes are not demonetized. That means they can still be used for transactions of all types till the 30th September 2023. जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 30 सितंबर 2023 तक आप अपने 2000 के नोट को अपने बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं या उन्हें 500 के नोट में एक्सचेंज करा सकते हैं। कृपया करके कोई भी कमीनापन ना करें। अपने काम वाली को, अपने रिक्शे वाले को, अपने ऑटो वाले को 2-2000 के नोट ना चिपकाएं। 100 रुपये का काम इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी चेंज कराना। लास्ट डेट टू एक्सचेंज ₹2000 notes is September 30th. Where to exchange 2000 rupees notes? At all banks and RBI regional centers. Exchange limit a total of ₹2000 will be available to exchange in one go from one bank. हैं? एक बार में सिर्फ 2000 रुपये चेंज करा सकते हैं? When will the exchange of notes start? Exchange of 2000 rupees notes will start on May 23rd. ये समझ नहीं आया बे। A total of 2000 rupees will be available to exchange in one go from one bank. मतलब कि मैं 2000 का एक ही नोट लेके जा सकता हूँ। Arkhon Info Media Group is greater than आज तक। Yes. भाई अब देखो इंडिया में क्या बवाल होगा, अभी देखना तुम अगले 3 दिनों के अंदर जो बैंकों पे लाइन लगेगी ना, तुम देख लेना। फिर गवर्नमेंट को रात को 8 बजे ये सारे काम करने की क्या चुल है? रात को 8 बजे क्यों करते हैं ये? तुम लोग तो शायद तब बहुत छोटे थे जब पहली बार नोट बैन हुआ था। अगर तुम अभी 11th के अंदर हो, यानी कि 2014 का तुमने नोट बैन नहीं देखा। 20,000 लिखना होगा शायद, पता नहीं, जो भी लिखना होगा। तुम लोगों में से मोस्टली अभी 17, 18, 19 साल के हो ना, यानी कि जब नोट बैन एक्चुअली में पहला नोट बैन हुआ था इंडिया के अंदर 2014 के अंदर, तब तुम्हारी एज क्या होगी तुम सबकी? 12-13 साल। भाई तुम्हें आइडिया नहीं है क्या वॉट लगी थी हमारी। नहीं भाई, नोटबंदी याद है, याद होगा, लेकिन तुम बैंक की लाइनों में नहीं खड़े हुए ना जाके। हम खड़े हुए हैं, हमें पता है क्या हाल हुआ था उस टाइम पे। मेरा करियर एज ए फोटोग्राफर उस टाइम स्टार्ट हुआ था जिस साल नोटबंदी हुई थी। बहुत ऐसी हालत हो गई थी। क्या बोले, अचीवमेंट किस चीज़ की आ गई? नोटबंदी की अचीवमेंट आ गई क्या यहाँ पे? अच्छा, मुझे लगा नोटबंदी की अचीवमेंट आ गई। हाँ, क्या ही हो रहा है यार देश में।
भाई मुझे पेमेंट आई नहीं है कहीं से, मैं तो पहले ही मना कर दूंगा भाई 2000 का नोट मत देना। अबे मर गया, अबे मर गया, नहीं मरा नहीं, बच गया। हर्बलिस्ट गुई न्यूज़ में टाइप है, आई नो। इन गेम 20K की जगह 2K कर दिया, 0 लगाना भूल गया, हो सकता है। Are you lost? Are you lost? No, I'm not. My name's Ayu. Ayu? And I'm here because... आयु, आपकी आयु कितनी है आयु? Hey there, Chi-Chi. Hi, Gui. What's going on? Hi, Traveler and Paimon. You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Okay. Dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में था, बताओ बताओ। So, what about your mom? Specific volume of cylindrical virus particle is 6.02 into 10 raised to the power 2 cc per gram, whose radius and length are 7a and 10a respectively. If sodium is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 per molecule, find molecular weight of the virus. मतलब सोडियम नहीं, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। भाई इतना नहीं पता भाई, अब हम डॉक्टर नहीं बन गए तो इतना पता होता तो। She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Rite, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millelith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. Na मतलब सोडियम नहीं, एवोगाड्रो नंबर। केमिस्ट्री में भाई, केमिस्ट्री में सोडियम को ही Na बोलते हैं, अब उसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते होंगे। वायरस का वेट निकालने बैठे, वायरस अगर डाइट पे हुआ तो कैसे वेट निकालेंगे उसका? I asked the Millelith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, वेट एक मिनट। चैट जीपीटी बताएगा, रुको, चैट जीपीटी से पूछते हैं तुम्हारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी बताएगा, एक मिनट। अच्छा, बड़ा एन है, छोटा ए नीचे लिखा होता है, ओ समझ गया। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, देखते चैट जीपीटी क्या बताता है। लेट्स ट्राई। ये रहा ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वायरस। ओके, यहाँ से मैं ओके, न्यू चैट, सेंड मैसेज। लेट्स सी। To find the molecular weight of the virus, we need to calculate the mass of the virus first. The specific volume cylindrical virus particles, which means लो भाई, पूरा आंसर ही बता दिया। लो भाई, तुम्हारा आंसर ये रहा। मैं चैट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लेना बाद में आराम से। है ना मस्त चीज चैट जीपीटी। पूरा उसने सॉल्व करके बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, सारा का सारा। हक दिया चैट जीपीटी ने। क्यों? सही आंसर नहीं है? क्या बात कर रहे हो, गलत है। चैट मिस क्या था? आज एक और शॉकिंग न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई भाई? तुम क्या आज बुरी खबर देने के लिए आए हो क्या? इसका आंसर 15.4 kg पर मॉलिक्यूल है। तो उसने क्या बताया?
ओके नाउ वी कैलकुलेट क्या था आज एक और शॉकिंग न्यूज़ आई है क्या न्यूज़ आई भाई एक मिनट पढ़े तो सही क्या है गुड न्यूज़ है हाँ बताओ बताओ गुड न्यूज़ दो इसका आंसर 15.4 है तो इसने क्या दिया वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल फाइनली बीजीएमआई अनबैन होगा ये तो मैंने दिन में ही बता दिया था इसका 10⁻⁻23 में आया है आंसर 2.57 इंटू 10⁻⁻23 पाईग्राम पर मोल है अगर मैं ऐसे डाल दूं भाई अपने को समझ नहीं आ रहा चैट जीपीटी खुद ही कर लेना बीजीएमआई के तो मैंने दिन में भी देखी थी बीजीएमआई अनलॉक हो गया था तो मैंने दिन में भी देखा था लेकिन एक बात है चैट जीपीटी ना यूजफुल तो है नो डाउट या तो क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा होगा सीधी सी बात है क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा होगा हमने क्वेश्चन को और ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है जो भी एआई मॉडल होते हैं ना वो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स पे काम करते हैं अगर प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही है ना तो ही ढंग से काम करेगा मैंने तो तुम्हारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया वन मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसने 10⁻⁻23 बोला और 6.022 की जगह 8.0 समथिंग बोला वेरी क्लोज तुम चैट जीपीटी यूज करो अपनी बुक का क्वेश्चन एग्जैक्टली उठा के डालो वर्ड टू वर्ड उठा के डालो तब देखो क्या बोलता है Hey, who's talking about me behind my back? Changshang. Changsheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही डाला था तुमने क्लोज कोई एंगल सा नहीं है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डाला था दोबारा ट्राई करेंगे कोई और क्वेश्चन बताओ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baizhu? दोबारा डालता हूँ चैट जीपीटी एक मिनट GPT-4 कोई और क्वेश्चन उठाओ यार एग्जैक्टली क्वेश्चन टाइप करके भेजो मुझे डिस्कॉर्ड में भेजो कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ भी चेंज किए बिना Uncle Baizhu. लो और नहीं और अगर कहीं से आंसर नहीं मिल रहा तो प्लीज बाइजू ट्राई करो ये तो बाइजू का ऐड हो गया ये भी तो बाइजू है ना तो अगली बार बाइजू ट्राई करना तुम्हारा गेंशिन में निकले ना निकले बाइजू यहाँ जरूर निकलना चाहिए ये लो एक हाँ भेजो भेजो Changsheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Dr. Baizhu. I see. And your family lives near Qingse village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Rite. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Is that so? Are you? By any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baizhu? I certainly do. Gui, Chi-Chi, भाई दो are there 2 any days में pressing matters in TL50 the हो pharmacy at जाएगा the moment? अभी 49 है शाबाश मेरा 45 हो गया मेरा 45 हो गया
भेज दिया डिस्कॉर्ड पे भेजा अभी। अब देखो, अब देखते हैं क्या बताता है ये। लेट्स सी चैट जीपीटी। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ concentrated sulfuric acid 98 mass percentage H2SO4 density 1.84 grams per centimeter cube required to prepare solution of sulfuric acid is। भाई तो आधा ही क्वेश्चन है, पूरा तो भेजो। इस पे खत्म हो गया ये तो। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ओके अच्छा, इसके आगे हमें ढूंढना है। चलो लेट्स सी क्या बोलता है ये। भैया इतना भी कर रहा है ना, मेरे लिए तो यही बहुत इंप्रेसिव है। ये इसने इतना ही बता दिया, ये बहुत इंप्रेसिव है। Therefore, the volume of concentrated sulfuric acid required to prepare 5 of a solution is approximately 0.13333 dm cube 3. Answer 136. अब मुझे नहीं पता है dm raised to the power 3 क्या है। सीरी लेवल 70 के लिए रेडी है, सब मटेरियल्स प्री फार्म हो गए। जोरदार, बहुत जोरदार। हम भी वेट कर रहे हैं। तुम यार ये देखो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा आंसर ही दे रहा हूँ, तुम ये आंसर पढ़ो और मुझे बताओ कि इसने गलती कहाँ पे की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसने गलती कहाँ पे कर रहा है ये लो, मैं तुम्हें पूरा इसका आंसर यहाँ पे टाइप करके दे दिया। चेक करो कि ये गलती कहाँ कर रहा है। वैसे इट इज़ नॉट ऑफ। अच्छा, मतलब सही था। भाई इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने सारे के सारे क्या कहते हैं चैट जीपीटी से करने शुरू कर दो। आजकल स्कूलों के अंदर बैन हो गए चैट जीपीटी, नंबर कटने लगे बच्चों के। इसका आंसर है 0.133 dm raised to the power 3। एक मिनट पूछता हूँ, व्हाट इज भाई 133.33 सेंटीमीटर पर क्यूब। तुमने 136 बोला, सही है यार। आंसर वेरी क्लोज, 133.33 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर रेज़्ड टू द पावर 3। और तुमने 136 बोला, इसने 133 बोला। अच्छा 136 133 सेम है। लो भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर यूज मत करना शुरू कर देना। पता लगा आपसे क्या कहते हैं सिर्फ चैट जीपीटी के तुम्हें होमवर्क करा रहा है। इसने प्रिसाइज कैलकुलेशन किया है। ओह मतलब तुम्हारी कॉपी में गलत लिखा है। मेरा गारंटीड है, क्या पुल करूं सोच रहा हूं, शुड आई सेव फॉर ब्लेड। यार मेरे हिसाब से ब्लेड और काफका के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है कि उनके एक्चुअल मल्टीप्लायर्स क्या होंगे, क्या कितना वो डैमेज देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम सेव करना चाहो तो सिल्वर वुल्फ के लिए सेव कर सकते हो। हम एवरेज मार्क्स लेके करते हैं तो आंसर तो है थोड़ा सा अलग है, ये एग्जैक्ट मार्क्स लेके करता है। वाह भाई, पुल्स भी नहीं है तो भाई सेव करो, फिर सिल्वर वुल्फ के लिए सेव करो। Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? आयु के पेरेंट ओल्ड एक्वेंटेंसेस है तो इसको पता नहीं कि ये उनका बच्चा है। ऐसे कौन से ओल्ड एक्वेंटेंसेस हैं? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. जिंग युआन को स्किप कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास सीला है ऑलरेडी तो तुम जिंग युआन स्किप कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास सीला नहीं थी तो मैंने जिंग युआन निकाल लिया, जिंग युआन का लाइट कौन निकाल लिया। उतना अच्छा नहीं लगा, उसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है यार। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका एनिमेशन मस्त है। खाने खा के आया मैं। ओके Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. एनिमेशंस गॉड टियर हैं, प्लस डैमेज भी इसका काफ़ी अच्छा है। गॉड टियर भी डैमेज, आई नो, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जिंग युआन है, जिंग युआन का लाइट कौन है मेरे पास। Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu?
Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. और क्या अच्छा लगने लायक नहीं है। शायद उसका अच्छा, या शायद वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी एक ही आंख नज़र आती है। एमडी दिलावर, एक हेल्प चाहिए, बताओ भाई क्या हेल्प चाहिए? His family. Can you believe that little boy brought his father all this way to see the doctor? Oh, what a remarkable child. I didn't even know how to buy medicine by myself when I हाँ was his सेव करो, age. सेव कर सकते हो। ओके, कहाँ जाना है? कितना टाइम है योइमिया के बैनर के लिए? 3 दिन, 2 या 3 दिन। मेरी कुकी देखना प्लीज कैसा है और बताओ कि वेपन का पैसे से कितना एम मिलेगा। अभी देखता हूँ। Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we going to get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baizhu. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? हमारे ट्यूशन ने बैनर बनाया, भेजूं क्या? अच्छा तुम्हारा परसेंटेज वाला है? ओहो क्या बात है, भेज दो मेरे को पर्सनली भेज दो। अगर थोड़ा रिवील करना है तो यहाँ कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर है। नहीं करना तो मैं पर्सनली देख लूँगा बाद में। बिल्कुल ही ज़्यादा रिवील करना है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में भेज दो। गेंशिन में 70 पेटी है, बैक टू बैक 2 times 50-50 विन किया हूँ, क्या करूँ उसमें भी पुल्स नहीं है। कहीं ना कहीं तो जाओगे ना ब्रो। सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे बैनेट अच्छा हील करता है, तो मैं बोला आर्टिफैक्ट भी अभी तक डिलीवर नहीं हुए। बिना आर्टिफैक्ट के हील कर रहा है। Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. दिलावर भाई अभी देखता हूँ जरा सीन ओवर हो जाए फिर देखता हूँ As for updates, कुकी। I'm sorry to say that we've... The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. इसकी आवाज़ अच्छी है यार, साई ली की आवाज़ अच्छी है इसकी। इन लोगों ने स्टूडियो में फ़ोटो खींच के भेजा, वो फ़ोटो नहीं लगाया, कोई पुराना वाला फ़ोटो लगाया, उसके ऊपर बैकग्राउंड भी बराबर नहीं निकाला। अरे यार गलती कर दी। भेजा तो है तुमने, क्या कहते बताओ क्या करूँ? दिखा दूँ सबको स्क्रीन के ऊपर या रहने दूँ? तुम्हारे ऊपर। Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. मुझे कियारा चाहिए कैट गर्ल, बट डर लग रहा है 5 स्टार ना निकल जाए। यार देखो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में खाली पुल करना है। दिखा दूं अल्टीमेट रिवील? अरे वाह क्या बात है, नजर ना लग जाए। Congratulations Matrix topper 10th CBSE 2023 Mr. Prajwal Rao, rank 4th rank in Matrix, 96% All Saints High School, 99 out of 100। ये नंबर तो हमने देख ही लिए थे पहले। कल्याण भिवंडी, वाह शाबाश, लाइक कर दूं मैं जरा। क्या फोटो लगाई है भाई साहब, गर्दनी। दिस रिवील्स माई नेम। अरे तुम कौन से वो कॉर्प्स हस्बैंड? कोई बात नहीं, देख के भेजना था ना। अब तुमने बोला तुम्हारा नाम तो मुझे पहले से पता है, तुम्हारा नाम तो मुझे पहले से पता था, बाकियों को नहीं पता था। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स केयर्स। You will? Oh, Sorry we weren't able to... That's okay. Thank you for ओके कहाँ जाने का है? बहुत दूर। मुझे फेस रिवील से ज़्यादा टट्टीज नेम के पीछे का राज जानना। वो तो भाई इसने आज तक नहीं बताया, मैं कब से पूछ रहा हूँ कि कोई डेयर मिली थी, ये नाम रख लिया, क्या रीज़न था ये नाम रखने का? अब देखना। अरे सॉरी मैं भूल जाता हूँ यार, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।
कुकी लेवल 90, आपका एलिमेंटल मास्टरी 721। की ऑफ खजनेसत मत दो, ईएम वेपन दो भाई। %0.12% ऑफ देयर मैक्स एचपी। वैसे ये काम कर जाएगा, ये काम कर जाएगा। एचपी कितना का 35,000 ना, ठीक है, काम कर जाएगा, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। 0.12% ऑफ द मैक्स एचपी ना। तो मैक्स 0.12% ऑफ मैक्स एचपी कितना हुआ? हाँ भाई, जिसका 99 नंबर आया निकालो। 0.12% ऑफ मैक्स एचपी। एक मिनट, मैक्स एचपी कितना है? 35,897। 0.12। $43 इतना ईएम मिलेगा तुम्हें, और वो 43 ईएम इसमें जुड़ेगा तो ये 800 भी नहीं पहुंचेगा मेरे हिसाब से। उससे बेटर तुम उसको ईएम वाला ही कोई वेपन दे दो, ठीक है? ईएम वाला वेपन दे दोगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ऑल्दो इसकी जो हीलिंग है वो एचपी से भी कनेक्टेड है, तो ये भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। इट्स नॉट दैट क्या कहते हैं डिफरेंट। हीलिंग के लिए अच्छा है वेपन, और ईएम वाला पैसिव भी है। वही करो हीलिंग, क्योंकि इसकी एचपी से रिलेटेड है कुकी की, इसलिए योमिया के लिए ट्राई करूँ क्या? अगर 50-50 लूज़ किया तो मेरा काजुहा गारंटीड होगा। कर सकते हो, योमिया बहुत अच्छी है। शांगलिंग का बिल्ड प्लीज़ एंड आर्टिफैक्ट देखना। चलो मैं आया 10 मिनट में। ओके, शांगलिंग का बिल्ड दिखाओ। 61, 140, 200 ठीक है। कैच ठीक है। आर्टिफैक्ट भी अच्छे दिए हुए हैं, सही है। अरे वाह, गुड। पायरो डैमेज बोनस बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। तुम्हारी C6 और कर लो, मज़ा ही आ जाएगा। और पायरोनेडो को कर दो पहले क्राउन, सबसे पहले। Dad! Dad, can you hear me? ये कौन है? There's somebody over there! ये तो बाप है इसका। आपको सिल्वर वुल्फ या काफका अच्छी लगी गेम डेमो के अंदर? हाँ मुझे अच्छी लगी, बट काफका से बेटर मुझे सिल्वर वुल्फ लगी, क्योंकि सिल्वर वुल्फ की जो टैलेंट्स है ना वो ज़्यादा यूज़फुल है गेम के अंदर, गेम के लिए। बाय द वे आर्कॉन मैंने फाइनली एम्बलम फार्म करना शुरू कर दिया, अब राइडन मस्ट बिल्ड करूँगा। अब किया है, चलो दे रहा है, दुरुस्त है। अरे ये तो नींद में चल रहा है। Watch where you're going! ताओ अरे जाने देते, तेरा कस्टमर बन जाता, बेवकूफ लड़की। Dear customer, कह रही है वो। Longsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. जो मैंने कहा वही बोल You रही all है। right? Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? My word. I see she still hasn't warmed to you. सिल्वर वुल्फ नेक्स्ट अपडेट में आ रही है लूचा हीलर के साथ। शायद सिल्वर वुल्फ पहले नहीं आएगी, शायद पहले काफका आएगी, उसके बाद सिल्वर वुल्फ आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। टैलेंट हो गए सब के बस, सब आर्टिफैक्ट्स। ऑल द बेस्ट। Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Are you? Who am I? Your name is Xiao Liang, and you live just west of Qingsa village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog गाइस your लाइक दबा memory? देना अगर किसी ने अब तक नहीं किया हो। मेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी देख के लोग अक्सर भूल जाते हैं, मेरी बातों में ऐसा घूम जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो लाइक दबाना भूल जाते हैं।
जैसे कि भी 5 लोग यहाँ बैठे हैं और 3 लाइक हैं स्ट्रीम के ऊपर. Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes. Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away! Sorry, Hutao. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baizhu. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jialiang's system. God remains? Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. वैसे अब फ्रेंड लिस्ट में सबसे बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर कौन सा है जो फुली बिल्ड है होंका स्टार रेल में? मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो फिलहाल लोगों ने डाला हुआ है सपोर्ट कैरेक्टर तो किसी ने कुछ खास नहीं डाले हुए. एक बंदे ने ब्रॉनिया डाली हुई लेवल 50 और एक जो है वेल्ट है लेवल 50 इसी का मिस्टर प्रज्वल जी का, मिस्टर टीटीजी गेम्स, इसका बेल्ट है लेवल 50 के ऊपर. और बाकी 3 सीला है. एक बंदा एलन, उसकी है सबसे बेस्ट. I'm sorry. What? सबसे बेस्ट मैंने डाला हुआ है, जिन युआंग डाला हुआ है मैंने लेवल 60. God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? एलन मैं हूँ. अच्छा तुम ही हो? तो तुम्हारी ही है जो सबसे बेस्ट सीला है, मैं उसको बहुत यूज़ करता हूँ. वो बेस्ट एक तो इसलिए भी क्योंकि उसके पास उसका खुद का लाइट कोन है. बाकी और भी सीला हैं लेकिन उनके खुद के लाइट कोन्स नहीं है उसके पास. Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? तुम्हारी सीला ने आज अपनी अल्टीमेट पे 57k डैमेज दिया मुझे. कहाँ यूज़ किया तो मुझे याद नहीं. कैलेक्स के अंदर यूज़ किया था 57k डैमेज. Now you're bringing my great uncle into this? Baizhu, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. हाँ 57,000 डैमेज दिया उसने अल्टीमेट पे. Oh, really? I thought I was persona Granted, non उसके grata पास at Boo Boo Pharmacy. उसके पास You're वो being था. unusually generous today. मेरी E3 टिंग्यून का वो था, बफ था, दोनों स्किल और अल्टीमेट बफ था उसके पास. इसलिए ब्रो आपका बर्थडे कभी है? मेरा बर्थडे यार अगस्त में आएगा, अगस्त के अंदर 21st. Okay, deal. We're not going to solve anything by keeping Jia Liang here. क्रिट डैमेज इंक्रीज होगा. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. ओपनहाइमर देखने कौन कौन जाने वाला है? मैं. Not going to miss. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. मेरे छोटे भाई का भी वो ही है क्या? टेंग्यून या ज़ीला? Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to... Blockages within the cardiovascular क्या बात कर रहे हो? system. हमारे छोटे भाई का बर्थडे भी 21 अगस्त का Reduced है. blood flow and energy circulation. बहुत बढ़िया. कोइंसिडेंस हो गया. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baizhu, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baizhu's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baizhu? मैंने ट्रेलर देखा, मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेलर लगा उसका.
और प्लस ऑब्वियसली ब्रॉल स्टार्स खेलो ना भाई मैंने एक बार ना मोबाइल गेम खेलने की कोशिश की थी स्ट्रीम के ऊपर, लोगों ने कहा बंद करो हम हाथ जोड़ते हैं, तो मैंने फिर खेली नहीं उसके बाद। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल गेम्स का एक अलग से चैनल बनाऊं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मोबाइल गेम्स का एक अलग से चैनल बनाओ जिसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैं मोबाइल गेम्स खेलूं और कुछ नहीं। I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. No. I have a treatment plan in mind. We can start tonight. ऐसा क्या है मोबाइल में, लोग नहीं कि देखना पसंद करते यार, अब क्या कह सकता हूँ मैं। Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baizhu. Thank you so much. पीकी ब्लाइंडर्स वाला है मेन लीड एक्टर, हाँ सिलियन मर्फी। If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. चांगशंग की आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे हुताओ ही बोल रही है आवाज बदल के। Yes, of course, absolutely. है कि नहीं? I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baizhu and Changchang. Bye for now, everyone. Are you ready, Baizhu? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. ऐसा क्या कर रहा है भाई, कोई तंत्र विद्या कर रहा है क्या? एक हाथ में खोपड़ी लेके दूसरे हाथ में हड्डी लेके ऐसे घुमाएगा भाई, तो असली डॉक्टर है ना कि मतलब झाड़ फूक कर रहा हो यहाँ पे। चलो अच्छा, मेरे आर्टिफैक्ट्स की कुर्बानी वेस्ट नहीं हुई। 55 स्टार आर्टिफैक्ट्स फुली रिस्क था, बट मैंने वो रिस्क लिया, लेकिन ये सब में क्रिट रेट और क्रिट डैमेज रोल हो गया। क्या बात है। पीकी ब्लाइंडर्स देखो, आर्कन में फ़ैन बन जाओगे मर्फी के। मैं ऑलरेडी उस बंदे का फ़ैन हूँ, बल्कि मैंने पीकी ब्लाइंडर्स देखा भी नहीं है। मैंने पीकी ब्लाइंडर्स का पहला एपिसोड आधा देखा है अब तक। पीकी ब्लाइंडर्स। All's well that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baizhu mention those people from his past. Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baizhu's busy treating Ayu's dad. मेरी गानी CR47 CD 117 CD कम है भाई। आर्टिफैक्ट सेट कौन सा दिया हुआ है? While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? और इम्प्रूव हो सकती है क्या मेरी सीला? तुम्हारी सीला इम्प्रूव हो सकती है। क्रिट रेट के उसको क्रिट डैमेज थोड़ा और चाहिए होगा। Actually, don't tell me. Let फार्म me करते guess. रहो। मैं भी जिंग युआन के फार्म में लगा From हुआ the हूँ। looks on your faces, you've got some questions for me. मेरे पास आइडलॉन 6 सुशैंग है, मैं भी उसको बिल्ड नहीं कर रहा। मैं इस टाइम प्योरली उसके चक्कर में लगा हूँ, जिंग युआन के चक्कर में। जब तक वो ढंग से बिल्ड नहीं हो जाएगा ना, मेरे जिंग युआन का क्रिट डैमेज 135 है, क्रिट रेट 35 है, 35:135। मैं भी उसको फार्म करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी और भी अच्छे आर्टिफैक्ट्स मुझे उसके चाहिए। वॉन्डरर्स ट्रूप दिया है, फिर भी यार तुम्हारा 117 CD थोड़ा कम है दोस्त। बिल्ड हुआ भी नहीं कि बेइज्जती चालू करो हो जाएगा। Guilty as charged. Oh, and also, how come you and Baizhu could tell so quickly that Jialiang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Well, it is a dusty old tale by कौन सा this पीस point. इंप्रूव होगा वो तो अब जब मैं Long story देखूंगा, short, दोबारा गेम in खोलूंगा the तब देख के ancient बताऊंगा। world, dead Exactly gods याद were नहीं है। acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death.
These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baizhu learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baizhu's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director at Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baizhu's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. Okay. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baizhu is around me. He'd never tell me anything. True. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baizhu is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. We'll just have to ask Baizhu himself about all of this tomorrow. Next morning. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. ये तो खड़ा हो गया भाई. Dad! सीलो का बॉडी वाला you. पीस में क्रिट रेट में मेन स्टैट है. जैसे उसकी जगह क्रिट डैमेज वाला स्टैट आ जाए तो कैसा रहेगा. अभी मुझे उसके तुम्हारे सीला के एग्जैक्टली स्टैट से याद नहीं ना मुझे कि कितने बाई कितना है. क्रिट रेट बहुत कम ना हो जाए क्रिट डैमेज देने के चक्कर में, जैसे कि मेरे जिन युआन के साथ हुआ है. 135 क्रिट डैमेज है और क्रिट रेट खाली 35 है. Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baizhu's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baizhu. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. पता नहीं बाइजू का डायलॉग ऐसे है, बाइजू ऐसे बोलता है जैसे कि जेन्युइनली नहीं बोल रहा, मतलब कि बना के कुछ एक्सेंट बना के बात कर रहा है. हाँ, रिस्क तो है. इसलिए क्या है, फार्म करते रहो, काम करते रहो. जिस तरीके से गेंशिन के अंदर तुम्हें एक पॉइंट पर आर्टिफैक्ट फार्म कर करके कोई ना कोई बढ़िया आर्टिफैक्ट मिला, वैसे यहाँ मिल जाएगा.
Not at all, Dr. Baizhu. It's only because Jiang Li, what was her reason again? आपके साथ सीला का क्रिट रेट और क्रिट डैमेज कितना होना चाहिए? देखो यार वही वाली चीज़ है जैसे कि गेंशिन के अंदर होता है. स्टार्ट करो 50-100 से 50% क्रिट रेट 100% क्रिट डैमेज और फिर इसको इसके ऊपर ही रखो. क्रिट रेट 50 से नीचे मत जाने दो और क्रिट डैमेज 100 से नीचे मत जाने दो. सिंपल. अटैक भी होना चाहिए, अटैक भी रखो. You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wang Sheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Business rivals. Oh, come on, Baizhu. I'm not that unreasonable. I've been stuck indoors for too long. Baizhu, और take उधर me TL50 outside हो for जाए some फिर air, स्टार कर or I'm दूंगा going हार्ड to वर्किंग फार्मिंग. suffocate. 50 के बाद ही ज़्यादा रहता है. मैं ना मेरे तो 45-46 हो गया तो मैं अभी से थोड़ा फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तो लेवल 50 तक कुछ तो ढंग का मिलेगा ना. Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. बड़ा इंटरेस्टिंग कैमरा एंगल है. मतलब ये कैमरा एंगल जो यूज़ कर रहे हैं ना ये कि बिल्कुल ऊपर से ले आते हुए. वेरी इंटरेस्टिंग. ये मतलब ये क्या ट्रीट कर रहा है? अपनी क्या लाइफ फोर्स दे रहा है अपने पेशेंट्स को? But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Ah! Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? अबिस किया नहीं. अबिस पे से ना मेरा पूरा इंटरेस्ट उठ चुका है. मतलब कि जो भी थोड़े बहुत प्रीमोज मिलते हैं ना मैं सोच रहा हूँ आगे से अबिस मैं किसी से करवा ही लूँगा जिस इंसान को बहुत शौक है ना अबिस करने का. ठीक है सिड को दे दूँगा. उसे बहुत शौक है अबिस करने का वो कर लेगा. Traveler, Paimon. मेरा बिल्कुल The मन नहीं करता truth अबिस is, करने का. Baizhu did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the यही तो मैं कह रहा poison था. in his system. तुमने भी नहीं किया ना. मुझे यार पता खामखा का वो लगता है चोर. Baizhu, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. मेरा तो फ्लोर 9-10 करने का भी मन नहीं है. मेरा भी सेम. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. सेम मुझे अबिस अच्छा नहीं लगता. इससे अच्छा होंकाई स्टार हिल का अबिस बेस्ट है. यार होंकाई स्टार हिल में पता है क्या है? होंकाई स्टार हिल की फाइटिंग कुछ ऐसी है कि आपने ऑटो डाल के छोड़ देना है. 95% ऑफ द टाइम ऑटो वर्क्स रियली वेल. आपका काम उसी में हो जाता है. आपको कुछ करना नहीं पड़ता. मेरे ऐसा बंदा इसको स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना उसको ये फालतू काम बड़े बेकार लगते हैं. ऑटो में छोड़ दो. वही एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects,
For a limited time. Chung Chung? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baizhu's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Jiangsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Pom-Pom is greater than Paimon. अभी Pom-Pom से उतने इंटरेक्शन हुए नहीं ना. So जब तक वो नहीं होता तब तक Paimon मेरे लिए भी ऊपर है. Pom-Pom से बात ही कितनी होती है? ट्रेल ब्लेज लेवल का रिवॉर्ड लेने जाना होता तभी होती है. और एक बार सबका ट्रेल ब्लेज लेवल ऊपर बढ़ जाएगा या धीरे धीरे अपग्रेड होगा तो वो भी बात नहीं होगी. Baizhu, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Like Pom-Pom ट्रेन में सब काम करता है, cleaning, singing, sleeping. मैंने उसे रोते देखा. जब भी गया हूँ वो कोने में खड़ा होकर आंसू बहा रहा होता है. उसके अलावा मैंने उसे कुछ करते नहीं देखा. Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jialiang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. जो जियांग ली इसके डिसाइपल है. ओह. अरे भाई साहब बहुत दूर जाना है बे. Qingsa village. The door to Fontaine. Not actually the door to Fontaine. इसके ऊपर एक और गांव है. लीवे का. उसके बाद आता चिंगसा. ओह सो उसके बाद आता फॉन्टेन. वो रहा सामने फॉन्टेन. वैसे एक बात तो है, जब इनको सीनरी बनानी होती है ना दूर की, जो एरिया भी आया नहीं है, तो सीनरी काफ़ी अच्छी बनाते हैं. ये अच्छी सीनरी है. आई थिंक इस जगह पे पहली बार आ रहा हूँ मैं. ये घर में पहले कभी नहीं आया. इस लोकेशन पे पहले आया कोई? भाई साहब इस लोकेशन पे मैं पहले कभी नहीं आया. वाह क्या लोकेशन पे घर है यार. ये सारा इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे शायद एक गांव है इस तरफ, और उसके बाद यहाँ से फाउंटेन शुरू हो जाता है. बेसिकली सारा सामने फाउंटेन का एरिया बन जाएगा. मैंने भी नोटिस नहीं किया. Paimon's never noticed it before. Me too. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. If you ask me, Jiang Li was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon.
We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. तो उसने अपने पति को ठीक क्यों नहीं कर लिया? इसके पास क्यों आई? Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiang Li or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Welcome back. Welcome back. And you realize something? क्या realize किया? खाना खाते खाते. Paimon never knew you were so selfless, Baizhu. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. You are the first online friend or person that has seen my face. वाह, अब बहुत कुछ पता चल गया मुझे तुम्हारे बारे में. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the? Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now. Jiang Li has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. तुमने चीज़ नोटिस की मेरी स्ट्रीम 2K में होती है. मेरी स्ट्रीम हमेशा से 2K में होती है. मैं हमेशा अपनी मेरी स्ट्रीम जो है अपस्केल करके करता हूँ. यहाँ पे 2K में कुछ नहीं चल रहा है. यहाँ पे सब 1080p में चल रहा है. स्ट्रीम अपस्केल करके मैं 2K में करता हूँ. अब तुम्हारा फ़ोन आ गया ना बढ़िया वाला, उसमें 2K में चलती है स्ट्रीम. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. फ़ोन नहीं PC पे ही देख रहा हूँ. अच्छा तुम्हारा मॉनिटर अच्छा वाला होगा ना, क्योंकि मेरे मॉनिटर के ऊपर 2K नज़र नहीं आता. मेरा 1080p मॉनिटर है. यो ऋषु, वेलकम वेलकम वेलकम. आओ, लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, इससे पहले तुम भूल जाओ सब लोग. Traveler, Paimon, come quick! Come quick. What is this? Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. मेरा मॉनिटर बकवास है तो तुम्हें 2K में नज़र कैसे आ रही है फिर? हो सकता है आरियो चले ना. हाँ अरे नहीं, नज़र तो मुझे भी आती है. सॉरी गलत बोल दिया मैंने. नज़र तो मुझे भी आती, चलती नहीं है. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she?
No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. मेरा मॉनिटर 136768 है भाई, कहाँ से लिया है? Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear to a varying extent the call of the source. यो बोला उसने, यो और उसके बाद यही होगा, देख रहा होगा, उसके बाद कुछ ऐड करने के लिए नहीं होगा ना. ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हो चैट करते रहें, खाली देख रहे होते हैं. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient. The mother load. The mother load. एक डाउट है, हाउ टू गेट जियो 5G. भाई तुम्हारा फ़ोन 5G होना चाहिए, सिम तुम्हारी 5G होगी, फ़ोन में अपने आप चल जाएगा. तुम्हारे फ़ोन के अंदर ऑप्शन आता है 5G का, सिम सेटिंग्स के अंदर जाके. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? बेटा ही तो नहीं कर रहा कहीं. Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? या उसकी बीवी. Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it फोन is 5G है ना, हाँ likely तो a आ गया, फिर resident तो आ of the जाएगा. house. फ़ोन 5G है ना, फिर अपने आप आ जाएगा. सेटिंग में जाके देखो, गॉड जोन, हेलो व्हाट्सअप, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम. क्या हालचाल? आई एम हीरोनी. मैंने बोला था, देखा यहीं पर है, मैंने बोला था कि बंदे यहीं होते, खाली यो करके भाग नहीं गया वो. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. यार गेंशिन के अंदर ना एक ऑप्शन होना चाहिए, जो ऑप्शन उसमें है HSR के अंदर. जैसे कि बेसिकली मुझे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज करो थंबनेल बनाने के लिए. एक ना डायलॉग है ऊपर, HSR स्टारल के अंदर क्या होता है, बटन होता है, उसको दबा दोगे तो डायलॉग हट जाता है और तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो थंबनेल बनाने के लिए. ये कितना बढ़िया थंबनेल बनता, सोचो. भाई जी 2000 के नोट बंद हो गए. हाँ भाई जी, पता लग गया, पता लग गया. बंद हो गए, बैन नहीं हुए, ये बात का ध्यान रखना. नहीं तो लोग फालतू में क्या कहते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, पैनिक क्रिएट होता है. बैन नहीं हुए, कहीं भी एक्सेप्ट हो सकते हैं. आप बैंक जाओ, चेंज कराओ उनको. बैन नहीं हुए हैं, बंद हो गए हैं. लोग तो ऐसे वो आ गए हैं पैनिक के अंदर, जैसे कि पता नहीं कितने 2000 के नोट उनके पास पड़े हुए हैं. Huh? So you're saying it was Jiang Li? Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jialiang about it once he has made more progress in his recovery. मैं ज़्यादा मस्त नहीं हूँ. हार्डकोर ग्राइंड इन कॉड मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिजी हैं. अब इंडिया में टॉप 600 प्लस में पोजीशन है. ट्राइंग टू बी इन वन इन कंप्लीट इंडिया. ब्रो दैट्स वेरी इंप्रेसिव. बहुत इंप्रेसिव यार. लगे रहो बिल्कुल. मैंने कॉड मोबाइल खेला था, मोबाइल में भी नहीं खेला. मैं मोबाइल के अंदर FPS गेम्स खेल नहीं पाता, तो मोबाइल के अंदर खेला नहीं. मैं इसको ब्लू स्टैक्स के थ्रू PC में खेलता था कॉड मोबाइल एक टाइम पे. 2 साल पहले के करीब की बात है ना. तुम अगर उसको फ़ोन पे खेल रहे हो, तुम्हारा इतना अच्छा रैंक है, लगे रहो भाई. हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट. Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. आओ भाई सेड, क्या हाल चाल है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बात कर रहे थे. किसी ने मुझसे पूछा कि अबिस नहीं कर रहे. मैंने कहा भाई अबिस से मेरा मन उठ गया है.
अब मैं अबिस बिल्कुल नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी को दे दूंगा अबिस करने के लिए। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम्हें अबिस करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने सोचा अगली बार से अपना अबिस तुमसे करवाऊँ मैं। अरे उनका ऑफर से इनवाइट आना होगा ना, अच्छा वो अपने 5G की बात कर रहे हैं। अगर भाई मेरा एक लैपटॉप ऑर्डर किया था 3 दिन पहले, आज आने वाला था, फिर ऑर्डर फिर डिले कर दिया, इतना वेट किया। फ्लिपकार्ट वाले को गाली कैसे दे? फ्लिपकार्ट वाले को गाली कैसे दे? पहली बात तो तुम्हें क्या कहते हैं करना ही नहीं चाहिए था ऑनलाइन ऑर्डर। हमेशा अपने पास में जो सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है वहाँ जाके लो, वहाँ से तुम्हें बेटर मिलता है। हाँ अगर तुम्हें ऑफ़र अच्छे मिल रहे हो तो तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसा होता है। पिछले साल राखी पे मेरे एक दोस्त ने लैपटॉप ऑर्डर किया था, ठीक है, बहुत अच्छी डील मिल रही थी, कार्ड के क्रेडिट कार्ड के ऑफर लगा के बहुत सही डील मिल गई। वो जिस दिन डिलीवर होने वाला था ना उस दिन ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब आउट फॉर डिलीवरी था, आउट फॉर डिलीवरी होने के बावजूद ऑर्डर कैंसिल हो गया। सोचो। वेडनेसडे से स्ट्रीम करूँगा, आप आना। अरे बिल्कुल 100%, डोंट वरी। मैं तो 15K का टेक्नो वाले मोबाइल में खेलता गेम्स लाइक गेंशिन, स्टार रेल, कॉड, पबजी। भाई मैं नहीं खेल पाता फ़ोन के अंदर, एक तो फ़ोन गर्म इतना जल्दी हो जाता है। मैं स्टार रेल अपने फ़ोन में खेलता हूँ ना, मैं 10 मिनट से ऊपर नहीं खेल पाता, मेरा फ़ोन गर्म हो जाता बुरे तरीके से। HSR के वर्ल्ड 3 में कौन सा पाथ अच्छा है? HSR के वर्ल्ड 3 में यार मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास जिंग युआन है तो इलेशन ले लो, नहीं तो प्रेजर्वेशन या हंट लेके चले जाओ, तो वो सही रहेगा। डिस्ट्रक्शन मत लेना, बहुत बुरा है। आज मैं वर्ल्ड 3 हार गया डिस्ट्रक्शन के चक्कर में। फ्लिपकार्ट से नेवर बाय एनीथिंग। अरे वो किसी से भी दिक्कत हो सकती है। अमेजॉन के, मैं तो अमेजॉन डिलीवरी का बता रहा हूँ भाई, वो अमेजॉन वाले थे कि जिस दिन आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है कि आपका पार्सल डिलीवरी के लिए निकल चुका है और रास्ते में ही ऑर्डर कैंसिल हो गया। जाके जैसे कि दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस है, ऐसी मार्केट में जाओ जो कंप्यूटर की बड़ी मार्केट हो, वहाँ पर शोरूम पे जाओ, वहाँ पे लो, उनको बोलो देखो जी ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, अगर आप इसका प्राइस मैच कर सको तो प्लीज़ प्राइस मैच कर दो। और यूजुअली ऑनलाइन जितने भी ऑफर्स होते हैं ना वो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर होते हैं। जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड पे आपको 3000 ऑफ मिल जाएगा, ICICI के क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा। वो ऑफर आपके स्टोर में भी लग जाते हैं। बल्कि स्टोर के अंदर कभी कभी क्या होता है, लेटेस्ट मॉडल पड़ा होता है, ऑनलाइन लेटेस्ट मॉडल नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं कूलर के सामने बैठ के खेलता मैक्स सेटिंग नो लैग। ये आज सुबह ही मुझे कोई कह रहा था, कह रहा है कूलर के आगे बैठ के खेलते पंखा चलाकर। कूलर क्या है खेलो, पंखे क्या है खेलोगे तो क्या होगा, गर्मी में ऑलरेडी गर्म हवा आ रही है, वो फ़ोन और गर्म हो जाएगा। मेरे को भाई के लिए 3060 मंगाया, 3 फैन वाला, 30,000 दिखा रहा। मैंने मंगाया, इट वॉज 2060 3 फैंस इन 3060 बॉक्स। अरे बाप रे। Do you know anything about God remains in Chingsa village? गाइस लाइक कर देना अगर किसी ने अब तक लाइक नहीं की हो स्ट्रीम तो प्लीज़। Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. मैं कूलर वाला हूँ, हॉस्टल में वार्डन से सेटिंग बैठा के। सही है भाई, देखो ऐसा है, जिस हिसाब से तुम क्या कहते हैं प्रोफेशनल कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई कर रहे हो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और चल गया उसमें तुम्हारा काम, तो मान लो कि फिर तो पैसा ही पैसा होगा, है ना। लेकिन उस चक्कर में पढ़ाई में छोड़ देना, पढ़ाई पे भी ध्यान देना। इन चीज़ों का कुछ नहीं पता होता, कब चले कब बैठ जाए। हमारा ऑर्डर एक बार 26 दिन तक टलता रहा, फिर हमने कैंसिल कर दिया। गेमिंग, एनिमे एंड मनूस से बर्नआउट हो गया। आई एम रीडिंग नॉवल राइट नाउ। कौन सा नॉवल पढ़ रहे हो? टेल मी, आई कैन सजेस्ट यू सम गुड नॉवेल्स। Whoa. What? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. तुम लोगों के साथ चाहे जो मर्जी हुआ हो अमेजोन फ्लिपकार्ट में, जो मेरे साथ हुआ है ना, ठीक है, मतलब बड़ी फ़नी चीज़ थी और बड़ी क्या कहते हैं जो मेरे साथ हुआ, शायद मैंने पहले के बताया होगा। मुझे कार्ड रीडर मंगाना था। कार्ड रीडर पता है ना, जो SD कार्ड रीडर होता है, ठीक है, मेरे कैमरे के लिए वो मंगाना था, ठीक है। तो मैंने ट्रांसेंट का कार्ड रीडर ऑर्डर किया और वो कार्ड रीडर था ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये का, ठीक है। मैंने ऑर्डर कर दिया,
मिस्ट बॉर्न द फाइनल एम्पायर, मुझे मैंने सुना मिस्ट बॉर्न ट्रिलोजी बहुत अच्छी है, पढ़ो पढ़ो अच्छी है, ठीक है। तो मैंने कार्ड रीडर ऑर्डर किया, कार्ड रीडर मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर आया घर पे, पता क्या क्या देकर गए, है ना, गेस करो मैंने कार्ड रीडर मंगाया तो उन्होंने क्या दिया होगा। मैं पहले तुम लोगों को कुछ ट्रायल्स देता हूँ, गेस मारो कि मैंने ट्रांसेंड का कार्ड रीडर ऑर्डर किया है, ठीक है, और डिलीवरी मुझे किस चीज़ की हुई है, बताओ। आई एम गिविंग यू गाइज चांस टू गेस, गेस करो। Stronger and healthier? कार्ड Wow, और that's गेस करो। amazing! कार्ड नहीं, मैं कार्ड रीडर मंगाया था, तो क्या मुझे किस चीज़ की डिलीवरी हुई होगी। कॉर्ड मोबाइल एंड्रॉयड पे मैक्स FPS 60 जाता है, BGMI एंड PUBG में 90, बट मेरे मोबाइल के लिए मस्त बैटरी पे ऑप्टिमाइज है। खाली डब्बा, कार्ड की डिलीवरी, कार्ड ही दे गए, खाली नहीं। पता मुझे किस चीज़ की डिलीवरी हुई है, घाघरा चोली, पेन ड्राइव नहीं, घाघरा चोली, लिटरली इतना बड़ा पैकेट घाघरा चोली का मैंने ले लिया। मुझे लगा मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया होगा, मम्मी कपड़े वगैरह ऑर्डर करती रहती है ना, मुझे लगा मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया होगा, मैंने लेके रख लिया। फिर मैंने अपना अमेजोन की मोबाइल की ऐप खोली तो देखा कि उसके अंदर क्या कहता है, दिखा रहा था कि ऑर्डर डिलीवर्ड। मैंने ऑर्डर डिलीवर्ड, मैंने कॉन्टेक्ट किया कस्टमर केयर पे, मैंने कहा सर ऑर्डर डिलीवर दिखा रहा है, मुझे तो कुछ ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। वो कह रहे सर डिलीवर हो गया, आपने रिसीव किया है। मैंने कहा नहीं मैंने रिसीव नहीं किया, मेरे पास आया नहीं कार्ड रीडर, ठीक है। तो फिर मुझे क्या कहता है, फिर मैंने ना उस बंदे को फ़ोन किया जो डिलीवरी वाला था, जो मुझे डिलीवरी वाले का नंबर दिखा रहा था। मैंने कहा भैया आपने एक ऑर्डर देना था, आपने ऑर्डर नहीं दिया। कह रहा सर ऑर्डर तो दे दिया मैंने कहा आप तो आए ही नहीं, मैं घर पे ही हूँ। कह रहे नहीं सर आया था, है ना। मैंने कहा भैया मेरे को तो मिला ही नहीं। उसके बाद वो आया शाम को डिलीवरी वाला, उसने बोला, और मैं पहचान के उसको डिलीवरी वाले को, मैंने कहा यार तुम ही तो आए थे, तुम तो मुझे ये दे करके हो। कहते सर यही आपका ऑर्डर है। मैंने घाघरा चोली, मैंने कहा भाई कार्ड रीडर मंगाया, इसमें कार्ड कहाँ लगाऊँ मैं, घाघरा चोली में लगाऊँ या घाघरे में लगाऊँ कार्ड, ये बताओ कहाँ लगाऊँ, है ना। तो कह रहे सर अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा भैया वापस लेके जाओ। कह रहे सर रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दो, मैं ऐसे तो लेके जा नहीं सकता। मैं यार हद हो गई। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। उन्होंने क्या कमीनापन किया यहाँ पर, अमेजोन वालों ने क्या कमीनापन किया। यूजुअली क्या होता है कि जब आपका कोई ऑर्डर आपको रिटर्न करना होता है तो आपके घर से पिक होता है, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके घर से हम ऑर्डर पिक नहीं कर सकते, आप ऑर्डर ना हमें भेज दो, आप ऑर्डर हमें कोरियर करके भेज दो, हम आपके घर पे हम घर से पिक नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अगर वो घर से पिक करते तो उनको मुझे रिफंड देना पड़ता, क्योंकि उनका बंदा लेकर गया मेरे घर से सब कुछ वेरीफाई करके, ठीक है। मैंने कहा यार मैं आपको क्या कहते हैं अगर कोरियर से भेजूँगा मेरे कोरियर का चार्ज भी लगेगा, है ना। वो करेगा सर कोई बात नहीं है, कोरियर का चार्ज आपको रिफंड हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से पैक किया, कोरियर किया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक रिटर्न स्लिप दी, मुझे एक ना रिटर्न स्लिप होती है, अगर आपको कोई भी पैकेज वापस भेजना है ना तो आपको एक रिटर्न स्लिप लगानी पड़ती है। रिटर्न स्लिप के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि मैं एक ना कार्ड रीडर वापस भेज रहा हूँ, रिटर्न स्लिप पे ये लिखा हुआ था। मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, मैंने कहा इसके ऊपर तो लिखा है कि मैं कार्ड रीडर भेज रहा हूँ, मैं कार्ड रीडर तो भेज नहीं रहा, मैं तो घाघरा चोली भेज रहा हूँ जो आपने मुझे चिपका दिया, है ना। तो कहते हैं कि नहीं सर ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने ऑर्डर की है ना रिटर्न स्लिप उसी के नाम का बनता है, आप टेंशन मत लो, हमने मार्क कर दिया है कि आपको गलत ऑर्डर डिलीवर हुआ है। मतलब उन्होंने माना कि आपको गलत ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उन्होंने मानी बात ये, ठीक है, कि आपको गलत ऑर्डर डिलीवर हुआ है, हमने मार्क कर दिया, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने भाई लेके भेज दिया। 2-3 दिन के बाद मेरे पास क्या मैसेज आता है कि आपका जो रिफंड है ना वो रिजेक्ट हो गया है। मैं रिजेक्ट हो गया, मैंने वहाँ पे जाके देखा तो पता क्या लिखा हुआ था कि मैंने जो है उनको चूना लगाया है, कि मैंने उनको गलत आइटम भेज दिया, है ना। फिर मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया। अब क्या होता है कस्टमर केयर पे लोग तो बार बार नए मिलते हैं ना, ठीक है। कहता है सर आपको तो कार्ड रीडर भेजना था, आपने ये क्या भेज दिया। मैंने कहा भाई तुम जाके चैट पढ़ो, मैं सारी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैंने कार्ड रीडर मंगाया, तुमने मुझे घाघरा चोली भेज दिया, मैं तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ बोलने के बावजूद कि भाई तुम्हारे रिटर्न लेबल के ऊपर गलत लिखा हुआ है ना। तब तुमने बड़ी एश्योरेंस दी मुझे, ठीक है। बड़ी देर तक मैं उनसे बहस करता रहा। फिर उसके बाद उनका जो मैनेजर है पता मुझे क्या कहता सर देखिए अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे टीम ने जो है इसको बैड रिटर्न मार्क कर दिया, अब आपको हम रिफंड तो नहीं दे सकते, है ना। तो बेसिकली व्हाट ही टोल्ड मी कि भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। और लिटरली 1000-1100 रुपये का कार्ड रीडर था, है ना। अगर कोई महंगी चीज़ होती तो मैं उसको परसू भी करता। फिर मैंने कुछ लीगल ऑप्शन, मैंने लोगों से बात की कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। तो किसने मुझे बोला कि काम करो लीगल नोटिस भेज दो। मैंने कहा यार लीगल नोटिस भेज दूँ, कह रहे लीगल नोटिस भेज दो। अगर लीगल नोटिस भेजना रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना है किसी भी कंपनी के खिलाफ शिकायत करने के लिए, तो आपको यह प्रूफ होना चाहिए कि पहले आपने कंपनी से सॉर्ट करने की कोशिश की, कि आपने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा, उस लीगल नोटिस का रिस्पॉन्ड ना करे तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, 1 साल तक का टाइम होता है। मैंने कहा यार मैंने लॉयर से पूछा, लॉयर कहता है कि लीगल नोटिस भेजने की
5,000 रुपये हैं। मैंने कहा ले भाई, 1,000 रुपये की चीज़ के लिए 5,000 का लीगल नोटिस में भेजूँ? कौन मत हमारे। अगर मैं बड़ा यूट्यूबर होता ना तो मैं इनको ले जाता कोर्ट का सीट के। मेरे साथ भी यही हुआ था। पीसी फैन वापस किया जब कैबिनेट मंगाया था, कुरियर करवाया, नो रिफंड। वही तो, चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे स्कैम है। चोली का चक्कर नहीं भाई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने घाघरा चोली जो मुझे पकड़ाई है, इसमें मैं कार्ड कहाँ लगाऊंगा? कार्ड चोली में लगेगा या घाघरे में लगेगा, ये बता दो आप मुझे। भाई बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। मुझे हंसी भी आती है, मुझे गुस्सा भी आता है कि क्या ही हुआ। मैं इमेजिन करता हूँ अगर कोई ज़्यादा महंगी चीज़ होती है, कोई फ़ोन होता है, कुछ होता है, तो क्या ही होता, फिर तो मुझे जाना पड़ता। यो देवेश व्हाट्सअप, कौन स्कैम कर गया? अरे भाई अब तुम पीछे करके देख लो वीडियो, पूरा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। वेलकम बैक किंग गेमर, वेलकम बैक। अच्छा जो भी नया बंदा आया प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो भाई। आगे करते हैं हम स्टोरी है। जब ऑर्डर पिक करने नहीं आएंगे बोला तभी समझ जाना चाहिए स्कैम है। हाँ, जब उन्होंने बोला ऑर्डर पिक करने नहीं आएंगे, वो मतलब कि वो तुमसे भिजवाएंगे और बाद में उसको बैड रिटर्न मार्क कर देंगे। Baizhu, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. फिर क्या 130 मिलियन यूएसडी का केस जीत जाते हैं भाई। मैं केस ठोकता हूँ उनके ऊपर, और तुम्हें कोर्ट का पता नहीं है। कोर्ट बहुत तगड़ा रिटर्न दिलवाता है। कोर्ट जो है ना, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनी है, तो जो हमारे लीगल सिस्टम है ना, बड़ा नफरत करता है इनसे। अगर कोई एक्चुअली तुम्हारा केस कोर्ट पहुंच गया ना, ठीक है, तो करवाते हैं ऐसे। सेंसे यो व्हाट्सअप वेलकम। कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का ना ट्रांसेंड कंपनी का नाम है, और अमेजोन जिससे मैंने ऑर्डर किया था। मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं करता। मैंने भी चीज़ सोच ली है। पहली बात तो जिस भी ऑर्डर पे मुझे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, मैं वही कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता हूँ हमेशा। ठीक है, अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो, क्योंकि जब बंदा आएगा तब तुम उसको यूपीआई पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, उनके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी करो ताकि तुम्हारे हाथ में चीज़ आके तुम्हें पता लग जाएगा। तुमने फ़ोन मंगाया है और वो डब्बा बड़ा भारी है, मतलब कि उसके अंदर ईंट है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी चीज़ तुम जाकर खरीद सकते हो स्टोर से, तो स्टोर से जाकर खरीदो हमेशा। या ऑनलाइन का चक्कर छोड़ दो। 30 मई के बाद अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली महंगे होने वाले हैं, क्योंकि 30 मई तक अमेजोन वाले जो सेलर के ऊपर जो चार्ज लगता है तो उसे बढ़ा रहे हैं। सेलर के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, सेलर ने प्रोडक्ट्स महंगे कर देंगे अमेजोन पे, ध्यान रखना। चोली के शत लड़की मैंने मेरे मोबाइल लिया अमेजोन से 7 दिन से 14 दिन पे आ गया। मेरा टेंशन लग गया कि कट गया, बट मोबाइल ही था। भाई मैं तो जाके लेता हूँ। मैंने अपना फ़ोन जाके दुकान से लिया, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया। द थिंग अबाउट फोन्स एंड लैपटॉप इज़ कि यू ओपन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द डिलीवरी गाय, एंड इफ इट्स अ फॉल्स प्रोडक्ट यू कैन गिव इट बैक एंड रिप्लेसमेंट मिलेगा। यू कांट डू COD विद एक्सपेंसिव थिंग्स। यार उसका भी उनके पास चक्कर होता है। उनके पास वो क्या होता है, जब तक आप उनको पेमेंट नहीं कर दोगे ना, डब्बा पकड़ के खड़े रहते हैं अपने हाथ में। ये भी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास ऑर्डर आता है, वो अपने हाथ में रखता है चीज़ को कि सर पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं आपको हाथ में पकड़ाऊंगा। 2000 नोट वापस बंद सितंबर के बाद। शाबाश मोदी जी। भाई तो जान लेके मानेंगे ये लोग तो। Unfortunately, Changsheng's contract has strict Brother, मैं requirements गानियों- regarding the host's temperament. गिन्यू None of टिंगू her पे hosts 50-50 have हार गया। ever been ब्रोनिया मिली। exempted from these rules. ब्रोनिया तो बहुत अच्छी है I fear भाई। that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. ब्रोनिया मिली। ब्रोनिया के लिए तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? अमेजोन की हरकत का वीडियो भेजूंगा, उसके बाद देखने के बाद अमेजोन ही यूज़ करना छोड़ दोगे। यार देखो, अमेजोन में ऑलरेडी जितना मिनिमम हो सके उतना यूज़ करता हूँ, ठीक है। पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे ही मिलते हैं, वो आपको लेने के लिए जाओगे ना तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। RBI डिसीजंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग मनी फ्लो। हाँ हाँ पता है यार। हैदराबाद में ऐसा नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। तो मुझसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलोगे ना भाई पहले पैकेट मेरे हाथ में दे, मुझे चेक करना है कि जो मैंने मंगाया वही है कि नहीं है, पेमेंट में तब करूँगा। तो अपने आप ही देगा हाथ में वो। आई नो ब्रोनिया, क्लारा एंड जेपार्ड। तो भाई क्लारा और जेपार्ड को साथ में यूज़ करो। मेरे साथ एक ही बार स्कैम हुआ है अमेजोन से, उसके बाद और कभी यूज़ नहीं किया। यही तो ये कंपनियां समझती नहीं कि इंडिया में क्या होता है, लोगों के साथ एक बार स्कैम हो जाए, लोग बहुत रेयरली उस चीज़ को दोबारा यूज़ करते हैं। Ugh! Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baizhu, you're mannequin man! Changsheng, you're just a वाह, pain in the neck! क्या क्रिएटिव नाम है, पेन इन द नेक।
आज बाइजू बोल रहा होगा बेंजो मेरी इज्जत नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा। हाँ यार आगे बढ़ा रहा है, एक सीन This पट के is बहुत देर exactly से। why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. भाई बाइलू ईजरो या नताशा E5 दोनों हैं, मुझे नहीं पता कौन यूज करूँ। नताशा E5 नो डाउट। All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? एक्चुअली दोनों यूज़ करो। आगे जाके तुम्हें फॉरगॉटन हॉल के लिए 2 टीम बनानी पड़ेंगी, जैसे अब इसके लिए बनाते हैं। तो तुम्हारे पास 8 कैरेक्टर्स बिल्ट होने चाहिए और हर टीम के अंदर एक हीलर होना ज़रूरी है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे बाइलू और नताशा दोनों है। एक में नताशा यूज़ करो, दूसरे में बाइलू। राइट नाउ नताशा बिल्ड करो। With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. ये शाओ को बुलाएगा क्या? What? Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. तुमको चोलू आया, मेरा तो डिलीवर्ड दिखा रहा था और प्रोडक्ट आया भी नहीं, ना रिफंड मिला। क्या मंगाया था? हाँ भाई अब हो गया मेरा जी ज़रा, मैं कोचिंग लेने हॉस्टल में रहूँगा विदाउट लैपटॉप, स्मार्टफोन और नेट प्रॉबेबली। सी यू नेक्स्ट ईयर। हैं कहाँ जा रहे हो भाई ऐसे? हिमालय की क्या कहते गुफाओं के अंदर तुम्हारा कोचिंग सेंटर है क्या, हॉस्टल? Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. शाओ You called? एक सेकंड में आता है, एक सेकंड में। Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baizhu of Bubu Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. चार्जिंग केबल था। बट सोचो अगर बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन विल बी क्रश्ड इन इंडिया। बहुत सारे कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। दीज कंपनीज आर टू बिग टू केयर। एक्चुअली में अलाउड नहीं है हॉस्टल में कुछ भी, प्रॉबेबली बाकी पूरी डिटेल्स अभी चलेगी पता। अरे दोस्त चिट्ठियाँ लिखना फिर हमें, तुम संदेश से आते हैं वो टाइप के। शाओ इज ओपी, उसका स्टोरी क्वेस्ट में उसका कंट्रीब्यूशन इज ऑफ द चार्ट्स। शाओ की स्टोरी क्वेस्ट कौन सी थी भाई? मैंने शाओ की स्टोरी क्वेस्ट नहीं खेली यार। The lantern rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Evil spirits की प्रेजेंस है तो चोंगयुन को ही बुला सकते थे, शन्हा को बुला सकते थे। एसएमएस करूंगा नोकिया 11 से लेके। ये भी सही है। So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. Lament. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Jingsa village. अभी देखा पीछे करके आपका स्कैम, क्या ही स्कैम करके लगता है कि पूरा सिस्टम बैठा के रखा है लोगों को जुआ लगाने के लिए। हाँ और क्या, फ्लिपकार्ट से एटलीस्ट अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मोबाइल यार देखो, मैं भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से पिछले 10 साल से ऑर्डर कर रहा हूँ चीज़ें। हो गए 8-10 साल हो गए ऑर्डर करते हुए। ये एक लौता ही स्कैम हुआ है मेरे साथ, घाघरा चोली वाला, द ग्रेट घाघरा चोली स्कैम ऑफ 2021। ठीक है, और नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव नहीं करते ये लोग, सब चोमू लोग भर रखे हैं। वो तो है, कस्टमर सपोर्ट सर ऐसे ही होते हैं। A vile monster known as the Ch once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. लोगों को किसी को याद है ये इस मॉन्स्टर के बारे में जो जिसकी बात हो रही है, च? इसके ऊपर पूरी एक लियुए की क्वेस्ट थी, द ची ऑफ योर, बहुत फेमस क्वेस्ट थी। कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव नहीं करते और कस्टमर सपोर्ट वालों के हाथ में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। मैं इसको कह सकता हूँ पूरे श्योरिटी के साथ, क्योंकि मैंने 6 महीने खुद कस्टमर सपोर्ट में काम किया, 6 से 8 महीने। इनके हाथ में कुछ नहीं होता। The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Jingsa village was founded some time after that. बताओ ना चोली का क्या हुआ फिर? वो चोली का यार पता नहीं, कहीं पे शायद फेंक दी होगी मैंने। क्या ही करूँगा, मतलब कोर्ट में केस जाता, मैं तो घाघरा चोली पहन के पहुँच जाता कोर्ट के अंदर।
कि देखो जी जज साहब ये भेजा इन्होंने मुझे। मेरा 2019 में भी हो गया था अमेज़ॉन से, अच्छा हुआ 599 का था प्रोडक्ट ओनली, इसीलिए तो मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि खाली वो 1000 रुपये का कार्ड रीडर था, कुछ महंगा होता तो मैं करता। The seal is still mostly intact. If the Ch is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. अरे वहाँ जाना पड़ेगा जिस जगह पे ये है ना च, जिस जगह पे है ये, वो बड़ी क्रीपी जगह है ली हुई। However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. जज कहता कि ये कोर्ट का केस चल रहा है, कॉमेडी नाइट विद कपिल का एपिसोड चल रहा है, ये आदमी लोग घाघरा चोली पहन कर आ रहे हैं यहाँ पे। I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that कोर्ट केस करना happens, भी हेक्टिक होता है। नहीं नहीं be नहीं sure to नहीं, call my name again. एक्चुअली क्या है कि कोर्ट केस आपको कोर्ट का नोटिस भेजना होता है, उस नोटिस का अगर उन्होंने रिप्लाई किया या उस नोटिस को उन्होंने नोटिस में लेकर आपको रिफंड कर दिया तो ठीक है, फिर आपको नॉर्मल कोर्ट नहीं जाना होता, आपको ये 30,000 वगैरह नहीं जाना, आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना है, वो अलग होता है, वहाँ पे आपको किसी वकील वगैरह को लेकर नहीं जाना होता। कस्टमर सपोर्ट ओनली प्री जनरेटेड चैट करते हैं। एग्जैक्टली Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Shell for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb gathering trips. If we can find the cave... we have already found the cave. Master! Master! There's a problem! Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? भाई 4 किलोमीटर दूर है। What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me everything. It's Jiaoliang. He was fine one minute and then he suddenly took a turn for the worse. AI आ रहा है अभी, कस्टमर सपोर्ट भी नहीं रहेंगे, फ्यूचर में बॉट से बात करना पड़ेगा, फिर हम अपने बॉट से उनके बॉट से बात कराएंगे। हाँ, हमारे पास भी तो AI होगा ना फ़ोन के अंदर, चैट GPT से कस्टमर केयर से बात कराओ। कुछ लोग तो US में ऐसा कर रहे हैं, चैट GPT के उन्होंने वो बॉट्स बना लिए हैं और कस्टमर केयर से चैट GPT को बात करवाते हैं। Already? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now! गाइस, किसी ने अगर स्ट्रीम लाइक नहीं की हो अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच। यार ये बूबू फार्मेसी के ऊपर अब तक व्यू पॉइंट मैंने अनलॉक कैसे नहीं किया? मैं भी खेल लेता हूँ थोड़ा गेंशिन। खेल लो Don't be scared. Dr. Baizhu will be back soon. How is he doing? कितने लोगों की जॉब जाने वाली है फ्यूचर में, इसलिए मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, जो कोई साथ साथ फॉर सेफ्टी। कुकिंग तो वैसे भी सीखनी चाहिए सबको यार। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स मेड, जितने ऑर्डर वो फकअप करते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। नहीं, एक्चुअली इट्स वेरी लो। अगर ज़्यादा होता ना तो अब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर बहुत तगड़े वाला लग चुका होता। द रेशियो इज़ वेरी लो। लीफो भी ऑलमोस्ट पूरा फार्म होने वाला है, फॉर गेंशिन ही खेलना पड़ेगा। बूबू फार्मेसी के ऊपर व्यू पॉइंट है। हाँ वो देखा मैंने। Dr. Baizhu, you're back. My dad was doing fine earlier,
but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gui left, he was still conscious. But now... Gui, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. 10 साल में robots and bots will study in IIT. Secret art again. Already पढ़ रहे हैं भाई. जो already पढ़ रहे No हैं. other way to save Jialiang? जो ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, आईआईटी में, वो बेचारे इंसान कहाँ बचे हैं. उनकी इंसानियत तो कब की मर गई है. वाह क्या व्यू है. मुझे एआई जो है ना, एआई मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर थोड़ा डरावना लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि अभी के अभी बैन हो जाना चाहिए. एआई का एक एस्पेक्ट ऐसा है, बाकी सब बढ़िया है. एआई का एक एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है कि जो डीप फेक्स है ना, किसी की आवाज़ कॉपी करना, किसी का फेस कॉपी करना, ये बहुत बहुत डेंजरस है. आगे जाकर तुम किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये चीज़ बैन हो जानी चाहिए. जिस तरीके से ह्यूमन क्लोनिंग बैन हुई है कि आप एक्चुअल में ह्यूमन को क्लोन नहीं कर सकते, वो बैंड है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में बैंड है. ठीक है, तो उस तरीके से ये भी बैन हो जानी चाहिए. बाकी एआई इज़ वेरी यूजफुल. अंदर से मर चुके हैं वो लोग. एग्जैक्टली. Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. 50 साल बाद ह्यूमंस एंड रोबोट्स के साथ में बच्चे होंगे. वो तो ऑलरेडी हो रहा है. ये तो ऑलरेडी हो रहा है. अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं. एक मिनट, अभी चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, रुको. तुम्हें शायद ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो ये ज़रूर देखना. ये वीडियो दिखाता हूँ. एक चैनल है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी दिखाता हूँ. एक मिनट. चैनल का नाम क्या है? डेमी ली सी. एक मिनट, अभी नाम याद आएगा. मैंने सब्सक्राइब तो कर रखा है यार उसको, नाम क्यों नहीं याद आ रहा. या मैं सब्सक्राइब करना भूल गया बंदी को. साइंस का चैनल है एक. हाँ ये क्लियो एब्राम. क्लियो एब्राम का चैनल है. इस चैनल पे जाना और ये चेक करना. आर्टिफिशियल वूम. ये वीडियो देखना आर्टिफिशियल वूम्स के ऊपर. वुड यू यूज एन आर्टिफिशियल वूम. ठीक है, क्लियो एब्राम आर्टिफिशियल वूम्स के ऊपर है पूरा का पूरा. ये जाके देखना ज़रूर. Wait, where's Dr. Baizhu? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baizhu in person once he's finished resting. Traveler,
Baizhu hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... Huh? Hey! Huh? You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. I managed to learn something. अगर फ्लिपकार्ट से स्कैम होता है तो कंज्यूमर कोर्ट हमें वो प्रोडक्ट बस देगा कि कुछ और भी देगा, वो डिपेंड करता है कि स्कैम का लेवल क्या है और क्या कहते हैं कंपनी ने तुम्हें किस तरीके का सपोर्ट दिया है। उसके बाद अगर कोर्ट को ज़्यादा गुस्सा आ गया और कोर्ट को लगा कि तुमने अगर ये प्रूव कर दिया कि इनका तो हमेशा का काम है, मुझे बहुत स्कैम हुआ, मेरा बहुत खर्चा क्या कहते हैं ये सब कोर्ट के चक्कर काटने में हो गया, तो तुम्हें उसका रिफंड मिलेगा प्लस कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इनको ऊपर से कॉम्पेंसेशन भी दो, और वो कॉम्पेंसेशन कुछ भी हो सकता है। Jiangli's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baizhu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right. Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baizhu! Changsheng! Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. इंडिया का लीगल सिस्टम इफ प्रैक्टिस्ड विदाउट करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखो यार, इंडिया का लीगल सिस्टम करप्ट नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का लीगल सिस्टम इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसको तुम एक बार वो कह सकते हो कि इट इज़ करप्शन फ्री, पर इट इज़ वेरी स्ट्रेस्ड। हज़ारों, एक जज को हज़ारों केस सुनने होते हैं, हज़ारों केस, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस सिस्टम है। अब उसको क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रेस हटाने के लिए ही कुछ कदम उठाने होंगे। द सिस्टम इज़ नॉट करप्ट। Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. But that's what makes the system so strong. It's not easy to become a judge. हाँ, इंडिया में जज बनना इजी नहीं है। तुम्हें पता है इंडिया के अंदर जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है इट इज़ वेरी डिफरेंट देन बाहर। यूएस के अंदर जज इलेक्शन लड़के बनते हैं जज, अगर तुम्हें पता हो। वहाँ पर ये नहीं होता, अपॉइंटमेंट नहीं होती वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फेडरल लेवल के जज होते हैं उनके एक तरीके से इलेक्शन टाइप के होते हैं। Though it was created from God remains, this formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it.
Jiang Li had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy. Or he could have still perished at any moment. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiang Li has exposed herself to them. Learning biology with Baizhu. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jia Liang's life, Jiang Li has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiang Li would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Fate? Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jia Liang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiang Li is. Her regular exposure to God remains over such a long period will have been catastrophic for her health. ये पीछे यहाँ पे खड़ा कोई सुन रहा है क्या या कोई NPC है यहाँ पे ये? And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. अबे तो जियान लियांग ही है. It's me, Traveler, Dr. Baizhu. मेरा जोंगली देखना फाइनली 4 पीस मिलित हुए आज. शाबाश अभी देखते हैं. It's Jia Liang! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baizhu, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiang Li's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own safety, you should stay here and rest. No! We're out of time! We have to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that? I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? बड़ी heavy themes को tackle किया जा रहा है. There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find सब लोग her. यहीं खड़े होके क्यों सुनते हैं? Very well. Then follow me. Dr. Baizhu, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen, and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it works. Dr. Baizhu, do you mean... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. ओके कहाँ जाने का है? बहुत दूर जाना है. मेरा एयर लेवल कितना हो गया? बहुत इकट्ठा करना है अभी तो यार.
That strange it's just like the day I went missing. It's as if The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or भाई because the अमेज़न leakage फ्लिपकार्ट of की बातें blood करके is मैं डर growing चुका more हूँ मेरे लैपटॉप को severe? क्या होगा. आ जाएगा यार, इतनी टेंशन मत लो. नहीं आया तो पैसे दे दिए सारे या नहीं दिए अभी? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Yes, I'm sure of it. न्यू मेल क्या है? अच्छा डेली चेक इन. चलो. Everyone hold hands. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. This place feels familiar. वाह, डोमेन आ I गया. think I've been here before. There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jialiang, are you okay? No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. वाह, क्या ये तो बिल्कुल ही उसके से बनाया हुआ है, डोमेन का टूम रेडर जैसा. This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders ये that क्वेस्ट dug की this स्टोरी tunnel. शॉर्ट में बताओ ना, अभी तो मैंने ही नहीं देखी भाई, पूरी ऐसे कैसे बता दूं. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curses. Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. लो जी, आ गया हमारा बाइजू. The doctor will see. Mind the sight. Rain outlines your fate. I see everything. स्ट्रिक्स G15. Whoa. अच्छा है स्ट्रिक्स G15 There's तो a अच्छा है. sensor पूरे here. नहीं दिए अभी, फिर ठीक है तो आ Those जाएगा, treasure टेंशन मत लो. hoarders sure made themselves at home. I believe this sensor was used to burn a monster repelling incense. A monster repelling incense? The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure कितने का बड़ा hoarders लैपटॉप to वैसे? flee और and उसके abandon their specs क्या है designs on लैपटॉप this के? cave. After them, Jiangli was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiangli. Yes, this was the place. This is where I told Jiangli to give me the poison. Jialiang! I'm fine.
Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. Okay. Body in mind. राइट बिलो यहाँ से कूद सकते हैं नीचे? नहीं, अंदर ही जाना होगा यहाँ से. Time to act. खुल जा सिमसिम. Ryzen 7 RTX 3050 Ti 16 GB रैम, बहुत बढ़िया. सही काम हो जाएगा तुम्हारा इसमें. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... Okay. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. भाई साहब, ये तो पूरा ही उन्होंने बना दिया टूम रेडर, लारा क्रॉफ्ट. Okay. Witness the power of Gua. Time to... Rain outlines your fate. Make yourselves at home. Remember, health comes first. The depths beckon. Be still. This way, Pernilla. Let me weave you a verse. I'll settle this. मुझे लगता है सालों हो गए गेंशिन खेले हुए. ऐसा क्यों लगता है भाई तुम्हें? फ़ोन में तो खेलते ही होगे, या फ़ोन में भी नहीं खेलते? पुश लिखा आ रहा है, ये पुश की जगह एक्टिवेट होना चाहिए ना. यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है. मैंने 8-9 दिन दोस्त का दिया गेंशिन लास्ट वीक. डेलीज कर देता है बेचारा मेरा. बेचारी गेंशिन की क्या हालत हो गई है. लोग डेलीज करवा रहे हैं उससे अपनी.
चलो ब्रो, मैं ही बस अब थोड़ी देर स्ट्रीम करूँगा, काफ़ी देर हो गई यार, 11 बजने 10:30 हो गए। 11 बजे तक मैं भी स्ट्रीम करूँगा, 11 बजे तक अगर ये ख़त्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बाद में करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे बाप रे, Jung-Li! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Dr. Baizhu, how serious is it? I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. इस जस्ट में सब गेंशिन से बोर हो गए हैं। नहीं यार, मैं नहीं हुआ गेंशिन से The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to एक्चुअली you. क्या होता है कि हर बार क्या होता है कि जब भी किसी इवेंट का या किसी अपडेट का हम एंड पे पहुंचते हैं ना, तो थोड़ा सा बोरिंग होने लगती है। इनाजुमा के टाइम पे भी यही हुआ था, फिर सुमेरु आया तो एकदम से सब लोग देखने लगे। अब इसके टाइम पे भी ये होने वाला, अब जैसे फाउंटेन आएगा फिर से लोग देखने लगेंगे। If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baizhu said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baizhu, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiang Li, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baizhu, give it to me straight. How long does Jiang Li have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... But what would be Dr. Baizhu? I'm all too aware of the dangers of god remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang Li have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see IU grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiang Li back, then even if I... मैंने जो सर्वे हो सब ऑप्शंस नॉट सेटिस्फाइड कर दिए, पर वो रीजन भी तो पूछते हैं ना कि आपने नॉट सेटिस्फाइड क्यों लिखा। रीजन बताते तो उनकी ज़्यादा हेल्प हो जाती। Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baizhu, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment. That's all. Of course. डॉक्टर्स का ये प्रेडिकमेंट है, you cannot save everyone. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang. Baizhu, Changsheng. Is it
really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. रीज़न मुझे नहीं पता, बस अब वो मज़ा नहीं आ रहा। यार देखो, गेम के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। कुछ लोग इस गेम को सिर्फ उसके गेम प्ले के लिए खेलते हैं, वो भी जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे आपने क्वेस्ट कर ली, कुछ बचा नहीं है, अब डेली बस कमीशन कर रहे हैं, अबिस कर रहे हैं, तो बोर हो गए। कुछ लोग खाली स्टोरी के लिए खेलते हैं, उनको कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, तो जब स्टोरी नहीं होती कोई, तो फिर वो उनको बाकी कुछ करने मज़ा नहीं आता। जो लोग सारे एस्पेक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा गेम में कुछ ना कुछ रहता है, या तो एक्सप्लोरेशन बाकी रहती है या कोई नई क्वेस्ट आ जाती है। What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli! I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. तोड़ी दी दवाई इसने। I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch how you grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Jialiang! 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 बच गए ये। Dad, are you awake? Jiangli, are you? मे भी मैंने इस मंथ से वर्कआउट स्टार्ट किया, आउटिंग ज़्यादा किया, इसलिए ऐसा फील हो रहा है मे भी। बट मैं भी बहुत आउटिंग वगैरह करता हूँ, पर गेम में अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट रहता है, ऐसे जाता नहीं है। Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? इन्होंने इसको ज़ॉम्बी बना दिया, चीची की तरह। Do you feel strange or different in any way?
If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baizhu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. What the hell? Zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. ये चीज़ हुताओ को बिल्कुल पसंद नहीं है जो इसने की है ना ये. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I'm as interested as you to find out. यार पता है मेरे हिसाब से ना ये इसने बाइजू ने गलत किया. उसका रीज़न ये है कि जब when somebody makes their peace with their own death, ठीक है, उस टाइम they are ready to go. उनको रहता है कि ठीक है I have made my peace, now I'm ready to go. उस टाइम पर उनको आप बचा के उनको 10 मिनट और दे दो, आधा घंटा और दे दो, तो दैट इज़ वेरी क्रूअल. या तो आपने उसको दिया या तो अब ये कह रहा है कि पता नहीं फ्यू ईयर्स मिल जाएं इसको, तो सही भी है, लेकिन अगर 2 महीने जी के फिर मर गया क्या ही फ़ायदा हुआ. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Who finds this arrangement to be a satisfactory one. क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ी मेढ़ी है. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death, and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Who's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingce village? Oops. And I'm busted. Without Director Who nudging things in the right direction, we may not have found Jiang Li in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Who told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baizhu, and cure Dad for good! Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. ये कुछ बोलेगी कि नहीं? Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh... बहुत मजा आता है Wait up! पॉडकास्ट I'll देखने come में. too! क्या लगता है कौन पॉडकास्ट करोगे फ्यूचर में? सेटअप तो ऑलरेडी है यार. पॉडकास्ट Baizhu, आजकल हर कोई कर रहा है. Thank you हम भी कर लेंगे. so much for everything you've done for us. कुछ अच्छा सा मिलेगा पॉडकास्ट करने के लिए तो. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. मेरे पास 1-2 बंदों का मैसेज आया तो था, मतलब 2-3 महीने हो गए किसी ने मुझे मैसेज किया था. उनका ऑलरेडी एक एनिमे वाला पॉडकास्ट था
and they were asking me to come as a guest on their podcast. मैंने बोला था कि ठीक है let's set it up. उसने कहा ठीक है मैं अपने partner से पूछ के बताता हूँ. फिर वो आए नहीं. Just your duty, huh? Baizhu, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? Okay. Now that you are part zombie, Yes, ma- first, don't forget to stretch your body regularly. yeah. क्लासेस चल रही हैं. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. ये एंगल रखो. I've taken a look at your ऑनलाइन elixir पॉडकास्ट of करना इजी होता है. immortality. जो रोगन जैसा किसी It's को भी not बुला लेना बस altogether एंटरटेनिंग बातें करनी dissimilar from होती the है. poison I concocted in terms It's of the way it functions. Not as simple. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. एक बंदा भी वाईटी पे फेमस हुआ है. वो खुद से ही पॉडकास्ट करता है. शॉर्ट से बहुत फेमस हो गया. वो सीरियस बातें करके देखा होगा आपने भी. नहीं मैंने नहीं देखा. खुद से बातें करता है. ये भी अच्छा तरीका है. Baizhu, कोई गेस्ट नहीं be मिल रहा honest खुद ही with गेस्ट me. बन जाओ. Did you try out some of the poison on yourself? Ha! Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jia Liang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to ऐसा worry कैसे about हमसे any बात कर रहा हूँ? long-term मुझे लिंक consequences भेजना to उसका, my मैं चेक health, करता हूँ. however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old. And I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. सर्च कर लो. अगर वैसे उसके कभी रील्स वगैरह में दिखे तो भेज देना. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhu, I can tell that,
over the years, you've used the contract with Changshang to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that some of them I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. हाँ जब बीच बीच में आ जाता है ना तो जैसे बीच में है उसका लिंक मुझे तभी भेज देना तभी शेयर कर देना Food's ready! Mom, come and join us. बड़ी जल्दी खाना बना लिया The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Zhang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Okay, अब कट सीन आएगा कोई Please give me a cutscene. Long ago, when plagues ravaged the land, Okay. one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer.
I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. Okay, तो क्या ये बाइजू को मारने के प्लान में है? Contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. सचिन अवस्थी के देखे हैं शॉर्ट्स, वो भी ओजी बंदा है, कुछ नया हटके किया बंदे ने और बहुत जल्दी फेमस हो गया. नहीं यार नहीं देखे, भेजना मुझे तुम. ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा भाई. कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पर क्या है ना बीच में बातें बहुत ज़्यादा करने लग जाता हूँ तो आगे नहीं बढ़ा पाता. हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baizhu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था सचिन अवस्थी एक्टर बनने के. 5-3-4 मंथ्स में ही यू टर्न ले लिया. ओ यार किसकी किस्मत कब चमकती है कुछ नहीं पता. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Changsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baizhu. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. For once, Paimon just does not know what to say. Yet you're still speaking. Dr. Baizhu, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk
for Changsheng and Paimon. Coco goat. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? Done. चलो जी हो गया अब अपन भी चले उफ हो गया यार 2.5 घंटे की स्ट्रीम होगी आज भी रात को चलो गाइस कोई है अगर यहाँ पे तो गुड नाइट नाउ ठीक है अब मिलते हैं बाद में उफ चलो गाइस टेक केयर See you.